to go across to Manoj Gaur at the Gaur Group, chairperson of CRIDAI. When it comes to demand in the real estate sector, do you think there are any practical suggestions that you have for Finance Minister Sitharaman which could potentially spur demand in different kinds of real estate? Real estate. I'm audible. I hear you well, Manoj. Go on. Especially for the real estate, a middle income group is increasing day by day. एंड गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस रहा है वो ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाया और करोड्स एंड करोड्स ऑफ हाउसेस फॉर ईडब्ल्यूएस इज ऑलरेडी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवर्ड. बट एक लार्ज जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है स्पेशली आफ्टर कोविड द लार्ज चंक ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप इज इंक्रीजिंग एंड फॉर दैट आई थिंक लास्ट 2-3 years ऑलमोस्ट साइलेंट फॉर दैट. ऑल द स्कीम्स आर विदड्रॉन. सीएलएस जो इंटरेस्ट सब्सिडीज भी वो भी गॉन हो गई है. The tax incentive for the affordable housing. I think a need to emphasis on the affordable housing. और इस बजट के अंदर जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी जो है कहा है कि मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर या उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहेगी, तो आई थिंक एक स्मार्ट वे टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ. जितनी भी डेवलप्ड नेशंस की अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें उसके अंदर जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का दैट इज अराउंड 15 to 20% ओवर द कई सालों तक. चाहे चाइना की बात करें या यूएसए की बात करें, स्टिल इंडिया के अंदर जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का वो अभी 8%, 10% से नीचे है. आई थिंक उसको इंक्रीज करने की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है. और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है 2017 के बाद इंक्रीज नहीं हुई है. सारी स्कीम्स जो है वो विड्रॉ हो गई हैं उसके अंदर. तो उसको एक इम्फेसिस करने की बहुत जरूरत है क्योंकि बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड हायर कैटेगरी के अंदर अवेलेबिलिटी है, लेकिन मिडिल के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर डिमांड बढ़ाने की जरूरत है. चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर आपका जो है 18 to 28% जो है टैक्सेस है, 5% जो है कस्टमर को देना था, नो इनपुट क्रेडिट है. तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को रैशनलाइज करके जो है उस सेगमेंट के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है जो कि आज की रिक्वायरमेंट है. Manoj ji, for joining us, thank you very much. The stuff being Finance Minister, Rajiv, because everybody's got very particular exemptions, rebates or incentives which they expect. That's Finance Minister Sitharaman leaving from her residence this morning. But the problem is the government's larger hope was that you rationalize tax rates and do away with these incentives, move to the new tax regime as it were. And now you're in this bind where, if you do that, then, for example, if you reduce taxation on new manufacturing units, can you spur manufacturing at a time when Donald Trump seems to be doing that and doing it very blatantly? So I believe to give a boost to manufacturing, we would need to keep working on other factor reforms as well, factor market reforms. So in particular, land, labor and capital. So land largely now it is being handled at the state level by the proactive state governments. On capital in particular, I think the credit markets in the country need a serious revamp, and that comes back to lending regulations set by the central bank. Because to create and scale up a large manufacturing sector, we need credit availability. And today, credit availability is very difficult, particularly for the medium and small enterprises who are expected to become large enterprises. And that's when the manufacturing share in GDP will grow from the approximately 15% level to the 20-25% level, when the small become the medium and the medium become the large. And without availability of credit, that is not going to happen. So the bond markets, the credit markets in the country need to be revamped. I don't think we are doing sufficiently enough to achieve that level of growth that we all want. Right now we have a situation where the large are becoming the super large are becoming the super duper large, and you've got a lot of people in the middle and the bottom who aren't necessarily growing, and that's really again a challenge that Finance Minister Sitharaman will need to deal with.